present time. We know everything about our nature, our environment, and the changes in nature. For example, we know how day and night becomes. We know how lunar and solar eclipse happen. We know everything about the flow of current, everything, whatever happening in our in our nature or our environment. Now we can send the rockets from Earth to the Mars and from Earth to the Moon. So how it is possible and how we know about that? So from these phenomena, the word comes science in the play. So everything we just understand everything just because of science. So, hello guys, I am Brijesh Sharma with you with my new video for the BHU preparation examinations, and I am launching my series of the BHU preparation for BHU BSc entrance exam 2021. Yeah, this is so soon because of, but the syllabus is too vast and we have to prepare and go work for it too much. So I am launching classes for our video classes for them, and today we will study about the physics. We will start the classes for the physics, and I will teach you physics with a better concept, with the vast knowledge and with the theory to clear the BHU entrance exam or all other exams like NDA or Air Force, etc. or for the JEE 2 and 12th examination for the CBSE boards and other state boards. So again, welcome to my YouTube channel, BHU Preparation. So let's start what we will learn today, and we will start here the basic knowledge about the science and the physics, and then we will go to the upper level. So let's start the video. Today we will start our classes with the word science. So let's start with our classes, and we will know what is science. So the word science comes from the word scientia, scientia, which means to know, to know. So we can say easily that if we want to know everything, yeah, we know anything, or we are going to know everything, that is science. Okay, this is the means of the word science. So this is basically the science, what is science, and as I have told you that I will teach you physics. So now physics. What is physics? Physics is the branch of science in which we read about, we talk about, we study about the nature, environment, and changes in the nature. So what is physics? The physics is the branch of science in which we study about the changes in nature and environment, in nature and changes in the nature. In other hand, we can say that physics is the branch of science. Physics is a branch of science. Branch of science in which we study about mass, energy, and their mutual changes. So this is the physics definition of physics. This is the branch of science in which we studies about the mass, energy, and their mutual changes. So how this happened means, I mean, how this definition comes, from where this definition comes. So
we will know before it. We will know that everything in our nature is made up with only two things. Yeah, only two things exist in our nature. But I'm not wrong. Don't worry. I'm totally accurate with the facts. So what are two things in our nature? First, first that is mass, and second is energy. Okay, we know that everything is mass in this marker. There is mass in our sun. There is mass in our body. There is mass, and everything what we can say that there is mass. And if you are not able to say them, so they are small particles, tiny particles, and we can also they are also the matter. Okay, so up now we will know what is from where comes energy. We will know about the energy. So what is energy? If the mass is working, so how? Just because of energy. If you are working, so how? Just because of energy. If is this your device, that is your phone or your laptop, computer, is working, so how? Just because of your, that's just because of energy. So every mass works with when it comes when it gets energy. So why is energy needed? Energy is needed for the function of any mass. So we can say that in our nature only two things exist, that is mass and energy. And the physics is the studies about the mass, energy, and their mutual changes. So everything in our nature which we can see, all we everything the every changes, everything which is our environment which we can see, there is physics in that, all phenomena or all things. So this is what we know, what is physics and what is science. So now we will go to the next. We will go next, and we will know about the what is so now we will know about the units. Units. What are units? So unit. Before that, knowing about the unit, we will know about the physical quantities. So physical quantities, we know that everything, whatever in a proper ratio or proper, everything is limited, and we have to count them. So if we are counting them like time or everything, so we have to count them. To count them means उन्हें गिनने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? We have to know about the we will count about them. So how we will count them? कैसे हम काउंट करते हैं उनको काउंट करने के लिए हमारे पास जरूरत होती है एक प्रॉपर यूनिट की. बिकॉज अगर आप सोचिए, इमेजिन करिए कि आपके पास कई सारी, आपके पास लॉट्स ऑफ चीज़ें हैं. लाइक आपके पास एक 2 किलो मतलब कुछ सेब हैं, कुछ अंगूर हैं, कुछ अनार हैं, कुछ और भी कई सारी चीज़ें रखी हुई, गेहूँ है, चावल है, सब कुछ रखा हुआ है आपके पास. तो हाउ वी विल काउंट देम? कैसे काउंट करेंगे आप? अगर हम कोई भी चीज़ें रखी हुई है, मान लो आपके पास टाइम है और मास है, आपने कहा लो 2 मास ले लो और 2 सेब ले लो, या 2 सेब ले लो, या 4 सेब ले लो. सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू मेजर देम. इज दिस? Am I right? This is not a proper way for the measure them. So we have a standard reference to measure every quantity and everything. So and that standard reference is known as unit. So what is unit? Units are the standard reference to count anything. Now
if we have counted like we have of two of we have मतलब मेरे पास अगर सेब है कुछ, क्या है, सेब है, मैंने कहा भाई 2 सेब हैं, 2 सेब तो काउंट कर सकते हो। मेरे पास मान लो मैंने कहा कि कुछ 2 है या 2 कुछ 10 है मेरे पास, लाइक 10 सेब ही हैं, तो 10 सेब क्या है, 10 गिनने में सेब है 10, तो गिनने वाला तो क्लियर हो जाता है, जो काउंटेबल है तो आसानी से समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड देम प्रॉपर्ली। बट हाँ, लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम कहें कि हमारे पास 2 पानी है, तो 2 पानी क्या है, 2 लिक्विड्स हैं, 2 वाटर है, तो क्या है 2 वाटर। व्हाट इज 2 वाटर, व्हाट इज 2 वाटर, इफ वी विल से दैट वी हैव 2 वाटर, तो 2 वाटर क्या है, किलोग्राम है, लीटर है, मीटर है, आवर है, सेकंड है, कुछ क्या है हमें नहीं पता है ना। अगर हमें नहीं पता है यूनिट्स, हम यूनिट्स नहीं होती तो क्या हम जान पाते कि 2 हमारे पास क्या है, नहीं ना। सो वी हैव टू नो अबाउट दैट टू। अगर हमें 2 को क्लैरिफाई करना है तो हमें इसके लिए स्टैंडर्ड डिफरेंस लाना पड़ेगा। एंड फॉर दिस थिंग द यूनिट्स, ये यूनिट्स आई, हर एक क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट्स, हर एक क्वांटिटी की यूनिट्स आई। अभी हम जानेंगे कि why there are different units for the different things or different quantities. So first, अब आपको ये तो पता ही चल गया यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, why we have need the unit or need the need of unit. Now we will so units हमें पता चल गई। Now we have a formula for the for the magnitude. How we measure magnitude? Magnitude is equals to number of the object and unit. So m is equals to magnitude n into u. This is the formula, basic formula for measuring any thing. For example, we have 2 of water, like अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था 2 of water। तो हमारे पास 2 वाटर है, लेकिन वाटर यूनिट किसमें होती है, लीटर में मीजर करते हैं ना, लीटर में मिलीलीटर में। अब ये पूरा हमारा मैग्नीट्यूड बना, और किसके साथ साथ में इसके लिए एक यूनिट जरूरत पड़ी जो है लीटर, ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरी बात आती है, इसके बाद एक दूसरी चीज आती है कि हमारे अब यूनिट हर एक क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग होती हैं, ये क्यों जरूरत पड़ी। वैसे हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो 7 होती हैं, आपको पता होगा कौन कौन सी होती है, मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड मास, लेंथ, करंट, जस्ट राइट इट, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, temperature, amount of substance and luminous intensity. So I think these are about 7. No, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, they are 7. So we have the 7 fundamental क्वांटिटीज, ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इमेजिन, अगर हम इमेजिन करें कि इसकी भी यूनिट कुछ भी हो, मान लेते हैं केजी हो, लेंथ की भी यूनिट केजी हो, टाइम की भी यूनिट केजी कर दी जाए और करंट की भी केजी, ये सारी यूनिट एक ही कर दी जाए। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर राइटिंग, लाइक वी हैव टू राइट दैट 2 kg, 2 kg। अब व्हाट इज 2 kg, तो या 2 ऐसे कितनी कुछ एक यूनिट कर दी है जो अलग हो, केजी तो हमें पता है कि मास की होती है, मतलब कि एक यूनिट, एक ही यूनिट सारी क्वांटिटी के लिए कर दी जाए तो क्या सही रहेगा, रहेगा सही, नो, नेवर। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिट, डिफरेंट यूनिट्स फॉर द डिफरेंट क्वांटिटी इज कम्स फ्रॉम हियर। Therefore there are lots different units for the different quantities. So like we have for the mass we have the unit kg or gram or kilogram.
For length, we have meter, centimeter, and foot, pound, foot, etc. For the mass, a pound is also a unit of the mass. Time. There is one unit of only time. There is only one unit of time. Second. It comes microsecond, microsecond, nanosecond, picosecond, etc. So, but the main thing is that is second. Okay. Come to current is ampere, and it also is a microampere, milliampere, etc. Milliampere. And for the temperature is Kelvin. This is a SI unit of temperature, or we can also know that degree Celsius, degree Fahrenheit, etc. Amount of substance, that is mole, and unit of the amount of substance is mole, and the luminous intensity is what is candela. So these are the units of the fundamental. So there is different units for. We can see that there is a different unit for the different quantity, physical quantity. So this how we know. This is how we know about the physical quantities and everything. Now we will talk about the parts of unit. There is two parts of unit. How many parts of unit? Only two. Which? Fundamental unit. Fundamental unit and fundamental or basic units. It is also called basic unit. And this is derived units. And the second one is derived units. So now we will study about the fundamental unit and derived unit. So what is fundamental unit? The unit of fundamental quantities is called fundamental unit. Fundamental unit. And what is derived unit? The units of derived units. The unit of derived quantities. Derived quantities is known as derived units. Derived unit. Now leaving this, we will talk about the now अभी हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे. But before derived units, we will know about everything about the fundamental or basic unit. So what is the basic or fundamental unit? The unit of the fundamental quantity is known as the fundamental unit. For example, we have fundamental unit mass. What is the unit of mass? Kilogram. We have fundamental unit time. What is the unit of the fundamental time? Is second. We have fundamental unit length. What is the unit of the length? Meter or centimeter, etc. So fundamental units or basic units are free, are the unit of fundamental unit quantities. And what are fundamental quantities? The quantities which does not depend upon any other quantity is known as fundamental quantities. What are fundamental quantities? Again, repeat with me. Fundamental quantities are the quantities which do not depend on the any other quantity. So we can also say that the units which do not depend upon any derived unit or does not depend on any other unit is known as the fundamental unit. For example, mass. The mass of unit is kg, time kilogram, and the mass of time is second. This is also fundamental unit, and the unit of length is meter is also a fundamental unit. The meter or the centimeter or millimeter, etc.
all food and food, etc. Now we will talk about the derived unit. What are derived unit? Before knowing about the derived unit, we have to know about the derived quantity. We have to know about the derived quantity. So now we will talk about the derived quantities. What are derived quantities? The derived quantities which depends upon the fundamental quantities. किस पे डिपेंड करती हैं भाई? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे. ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल आपके पास अगर वेलोसिटी का ही देख रहे हैं, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टेकन टाइम. सो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है लेंथ एंड what is time? Time is also a fundamental quantity. So length is a fundamental quantity and time is also a fundamental quantity. So what is now? So we can say that it is dependent on the fundamental quantity. So this is the derived quantity. Like force, work, everything, every quantity like force, work, pressure, everything, density, everything approximately. Beside the these seven quantities, like besides the seven fundamental quantity, every quantity is a derived quantity. So हमें पता चल गई फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं. अब और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? तो यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज इज नोन एज इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट. फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ velocity, we have already mentioned velocity. What is length upon time? Formula of the displacement upon time. Length, displacement is length. So length, what is the measure of it? Meter. Or what is time? Second. So meter per second. This is the derived quantity because here the unit of meter, length is exists and the unit of time also exists. Now for example force. What is force? Force is the multiplication of magnitude and acceleration. What is force? Force is the multiplication of the product of mass and acceleration. What is mass? What is the unit of mass? I already mentioned kilogram. And what is the unit of A? What is the acceleration? Acceleration, what is acceleration? Changes in the velocity with respect to time. So this will be also meter per second. So this is meter per second square. This is now we can say that there is the unit of mass, there is the unit of length, and there is also unit of time. So we can say that this is the also unit of these type of quantities are derived quantities. So थैंक यू. इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. आई थिंक आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें. आप लोगों ने अगर नहीं आई है तो ऐसे मुझे लगता है या मैंने जितनी भी कोशिश करी शायद आपको पसंद आई होगी. कोशिश छोटी थी. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को. अपने क्लासमेट के साथ जो भी BHU प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, BHU एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, और जो 12th में आप उनके बाद भी ज़रूर शेयर करिएगा. 11th 12th के बच्चे जो हैं जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आप एक काम करेंगे कि आप एग्जाम वीडियो आप देख रहे हैं तो आप कमेंट में अपना क्लास और आप जो भी जिस भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिस भी प्रिपरेशन के लिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जरूर मेंशन करेंगे. एंड कैसा लगा वीडियो जरूर आप बताएंगे कि अभी स्टार्टिंग है हमारी वीडियो की और ये सीरीज जो हम लाने जा रहे हैं BHU प्रिपरेशन की वो कैसी है. कि एक खास बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने सोचा था कि हम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास 2-2 दिन करेंगे, बट नाउ वी आर एक्सटेंडेड एंड हम आप क्या करें, अब फिजिक्स की क्लास डेली होगी आपकी एक्सेप्ट संडे के अलावा. एंड बहुत जल्दी हम लोग जैसे ही आप हमारा थोड़ा सा हमारा और आपका परिवार बढ़ता है, लाइक हमारा यूट्यूब परिवार यूट्यूब में फैमिली बढ़ती है, यूट्यूब फैमिली बढ़ रही है, जैसे वैसे ही हम एक संडे की एक सीरीज लाने जा रहे हैं जो लाइव होगी. एंड
उसमें आप लोग का पार्टिसिपेशन चाहिए। सो बिफोर दैट वी है हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल हमारा, अगर पसंद आया हो वीडियोस